Morning students. Next is electric flux. Electric flux. So write down please. Electric flux over an area in an electric field electric flux over an area in an electric field is the total number of electric lines of force passing through a surface area normally. So electric flux किसी particular area में in an electric field is the total number of electric lines of force passing through the surface area normally. Suppose let S be the surface area. This is a surface area. मान लीजिए कोई surface area है S, in which let ds be the small area. इस S में हमने एक small area मान लिया, let it be ds in an electric field E, और इस whole area में जो electric field है let it be E, कितनी है वो E. So let O be its center, O, and area vector ds. ds क्या है? Area vector है along this direction. If the direction of electric field is along this direction and theta is the angle between two, थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल है. देन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई और फाई ई के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इट विल बी डी फाई. स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए डी एस के लिए डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस. And for whole surface area it is equal to whole surface area के लिए phi e is equal to closed surface integral of E dot ds. Closed surface integral of E dot ds. So this is the electric flux for whole surface area and it is equal to क्या लिख सकते हैं हम? Total number of electric lines of force, total number of electric lines of force passing through the surface area normally. So this phi e is the total electric flux. Next, SI unit of electric flux क्या है? Electric flux की SI unit. So SI unit of electric flux is Newton
meter square per coulomb. SI unit of electric flux. E dot ds Newton meter square per coulomb. Newton meter square per coulomb. SI unit of electric flux. Dimensional formula of electric flux. Newton ml t minus 2 meter square L square per coulomb. Coulomb is the unit of charge. Q is equal to IT A into T per raised to power minus 1. So L into L square L cube T raised to power minus 2 into T raised to power minus 3 minus 1 क्या हो जाएगा T raised to power minus 3 into A raised to power minus 1. So this is the dimensional formula of electric flux. So note down please. Next is Gauss theorem or Gauss's law. Gauss theorem or Gauss's law. Gauss's law or Gauss theorem. Gauss's law क्या है? It states that total electric flux through a closed surface enclosing a charge is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by closed surface. So क्या स्टेट कर रहा है Gauss's law? It states that total electric flux, जो total electric flux है किसके इक्विवेलेंट होगा? Through a closed surface enclosing a charge, जो कि किसी चार्ज को enclose कर रहा है closed surface. किसी closed surface में कोई particular charge है. It is equal to how much? 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by closed surface. 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface. So phi is equal to q upon epsilon naught या epsilon 0. इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं. कैसे मालूम है आपको? phi e अभी फाइंड आउट किया था आपने. इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e and it is equal to closed surface integral of E dot ds and it is equal to q upon epsilon naught. It is equal to q upon epsilon naught. So this is Gauss theorem. Now we'll prove the Gauss's law or Gauss theorem. So ध्यान देंगे
और डायग्राम ड्रॉ करते चलेंगे साथ साथ में। Proof of Gauss theorem proof. Let us consider, मान लीजिए this is a sphere. Let S be the sphere in which an isolated charge Q is placed, in which an isolated charge Q is placed at center O. कहाँ पे प्लेस किया है चार्ज? सेंटर O पे. Let this charge be plus Q. Let small r be the radius, small r be the radius of this sphere. Let this be small r. Now let E be the electric field intensity at point P. Let this point be P, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है let it be E. Now let ds be the small area element. यहाँ पे हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर किया है. Let it be, ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, मान लीजिए ये जो एरिया एलिमेंट है कितना है? ds के बराबर. तो ड्रॉ करते चलेंगे साथ में. Let it be ds. Now also let a normal unit vector normal to this area element n cap be the unit vector which is normal to this area element, and this is the area vector ds along the direction of electric field, ds vector. So ds vector it is equal to ds into n cap. इसके इक्वलेंट हो गए मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, ds इंटू n कैप के बराबर. So let ds be the small area element such that n cap unit vector be normal to this area element, so ये जो यूनिट वेक्टर होगा क्या होगा? ये नॉर्मल होगा इस एरिया एलिमेंट के लिए. सो पहले फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Therefore electric field intensity at point P E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square
into r cap 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square into r cap. Let this be इक्वेशन नंबर 1. क्या लिखेंगे इसको? इक्वेशन नंबर 1 where r cap be the unit vector along the direction of electric field या along OP, where r cap be the unit vector along OP. यहाँ पे जो r cap है वो क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा along the direction of OP. OP की डायरेक्शन में क्या है? ये यूनिट वेक्टर है. सो देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स through small area element ds. इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से जो होगा वो क्या होगा? ध्यान देंगे, इट विल बी डिनोटेड बाय डी फाई. इसको किससे डिनोट करेंगे? डी फाई के साथ इसको डिनोट किया जाएगा. डी फाई एंड डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस. डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस. सो ई फाइंड आउट किया है आपने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर कैप इंटू डी एस वैक्टर. सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप डी एस वैक्टर को क्या लिख सकते हैं हम? डी एस डॉट एन कैप. ds vector dot n cap. So you know that r cap dot n cap किसके बराबर हो गए? 1 के बराबर. r cap dot n cap. So it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught what? d phi. स्मॉल एरिया एलिमेंट के जो लिए जो फ्लक्स होगा दैट विल बी डी फाई एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इनटू डी एस वेक्टर बिकॉज आर डॉट एन इज इक्वल टू 1. So let this be equation number 2, which is the value of d phi. Now the electric flux through whole surface area. Electric flux through whole surface area. So whole surface area के सराउंडिंग में जो फ्लक्स होगा वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? we'll just simply integrate this. That is phi e is equal to integral closed surface integral of d phi. Closed surface integral of d phi. सो डी फाई मालूम है आपको क्या है? फाई इज इक्वल टू डी फाई एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू
ds. So ds को हम इंटीग्रेशन में इनसाइड एंड आउटसाइड 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ds क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल. सो एक इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर एंड सरफेस एरिया इंटू 4πr स्क्वायर. अब यहाँ से जो कैंसल आउट टर्म्स हो रही हैं वो उनको कैंसिल कर देंगे. 4π कैंसिल विद 4π, r स्क्वायर विद r स्क्वायर एंड यू लेफ्ट हेयर विद q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. किससे लेफ्ट हैं? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ. सो फाई e इज इक्वल टू q upon epsilon naught. So phi is equal to q upon epsilon naught. So this is the proof of Gauss theorem that total electric flux through a closed surface enclosing a charge is equal to 1 upon epsilon naught times charge enclosed by the closed surface. So this is all about Gauss theorem. Note down please.